Hello everyone. Today I am going to discuss a new topic will be based on the divisibility of all prime numbers. So let us discuss here without wasting the time. And the first one we will discuss about that divisibility up to all the prime numbers. Okay. So let's see here. Divisibility rule. Divisible. Divisibility rule. First, we will learn divisibility rule of 2. Okay, so the first one is a divisibility of rule of 2. That, listen to me, that a number is divisible by 2 if its last digit or the ones digit is 0, 2, 4, 6, 8, then it will be divisible by 2. Let us understand. So we can see a number is divisible by 2 if its ones place or unit digit 0, 2, 4, 6 or 8, then it will be called as a divisibility of 2. So for examples we can write, for example we have, I can write here, I have written here 108. So what are you looking, one digit is a, this is one digit is 8. So what is the divisibility rule? If that is the unit digit is ending with the 8, then it will be called as a divisible of rule of 2. So it is ending with 8, so it can be divisible by 2. This is called, so we can take another example, 96. It is divisible by 2. Why it is divisible by 2? 96 because its unit digit is the 6 according to the rule, so it is divisible by 2. I can write 1, 4, 6, 7, 8. It is a large number but it is ending with the 8, so it is also divisible by 2. So that is why it is called divisibility rule of 2. Now we are going to discuss another prime number, that is 3. Divisibility rule of 3. Divisibility, we can write in short form, divisibility rule of 3. A number is divisible by 3 if the sum of all digits is divisible by 3, or we can say that the sum of all the numbers should be divisible, all the sum of all digits of given number should be divisible by 3. So you can see here some example is given here. Let us find out that it is divisible by 3 or not by the rules of divisibility rule of 3. So 39, 96, 83, 928 for examples we are going to understand. Okay, so let us understand. 39 is given here, 39. Let's add the these both digit. Okay, 9 plus 3, we can say 9 plus 3 is equal to 12. 12 is divisible by 3, so it can be, this number is divisible by 3. For example, another is 96. Add this both number, 9 plus 6 is equal to 15, so it is also divisible by 3 because 15 is the factor of 3. And now we can say 83. Let's check here, 83 is equal to, add this number, both number, it is two numbers. If there is three numbers, add all numbers. Okay, add all the digit of given number. 8 plus 3 is equal to 11. So 11 is not divisible by 3, that is why 83 is not divisible by 3. It does not shows the divisibility of 3. Let us find out another examples. 928. Add all digit. 9 plus 2 plus 8 is equal to 19. So 19 is also not divisible by 3 because it is not factor of 3. So now we are moving for to discuss another prime number, that is 5. So next prime number is a 5. So let's discuss that about 5. What is the divisibility rule of the 5? So see here,
the divisibility of 5. Divisibility, we can say divisibility rule of 5, that a number is divisible by 5 if its unit place or one digit is 0 or 5. So it is it if it the number is ending with the digit 0 or 5, then it will be divisible by 5. Let us example, for example we can understand here. For example, we have, for example, I'm gonna writing here examples. Suppose I have written 50, so it can be divisible by 5. Why? See the rules. A number is divisible by 5 if its unit place or we can say in other words, or the one digit is 0 or 5, so it is divisible by 5, because the 10 is the factor of 5. Okay, so we can write another 15 is divisible by 5. Why? Because its unit digit is ending with the 5 according to the rule. That is why it is divisible by 5. Let's discuss another prime number of 7. Now we are going to now I am gonna to discuss uh, the divisibility rule of 7. Divisibility rule of 7. What is the divisibility of rule of 7? First we will understand, we understand, okay, about that. So first process is that double of unit digit. Second, subtract in remaining number. Third step process will be continue till the number is divisible by 7. So this is the steps that you can find out divisibility rule of 7. Double of unit digit of a given number, डबल करना है, एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट इन रिमेनिंग नंबर. जो नंबर बचा उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. एंड ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक 7 से नंबर डिविजिबल ना हो जाए. अब चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो हियर वी हैव अ नंबर 798. लेट्स फाइंड आउट दैट ये नंबर is divisible by 7 or not. Okay, so we are going to solve it. First was the process is that double of its unit digit. So we are going to say that unit digit is 8. We can say 8. So हम 8 को क्या करेंगे, डबल करेंगे. 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16. अब बचा हुआ नंबर जो है यहाँ पे 79 है. यहाँ पे 79 है तो 79 माइनस क्या करेंगे 16. दैट इज द सेकेंड प्रोसेस. तो 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 इज 13 3 आएगा, एंड 7 में से 1 करेंगे देयर इज 6. So now we can say that the 63 is a number can be divisible by 7. So this is the process by which you can divide any of the given number by the 7. Okay, if you want to find out, जब से आपको पता करना है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होती है, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट. ये प्रोसेस टिल द एंड चलता रहेगा जब तक ऐसा कोई फैक्टर ना आ जाए जो 7 से डिविजिबल है. So we can just assume another examples. For examples 5 4 6 2. So this is example 5462. Let us find out that this given number is divisible by 7 or not. So the first process is the unit digit 2 है यहाँ पे, इसका डबल करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4. सो अब रिमेनिंग नंबर 5 4 6 बचा है, तो क्या करेंगे 5 4 6 माइनस क्या करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 5 4 and there is a 2. अब नाउ अगेन द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू. अब प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा. सो इस नंबर का क्या करना है 542 हमारे पास नंबर है, इसका क्या करना है डबल. वन प्लेस का तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट हियर 5 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया 52. सो ये प्रोसेस, so we can see here that 5 4 minus 4 is equal to
50, so it is not divisible by 7. So this is a number, this is a process by which we can see कि ये नंबर डिविजिबल है 7 से और नॉट है. जब ये फैक्टर 7 का फैक्टर आ जाएगा तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल द एंड की जब तक डिविजिबिलिटी ऑफ 7 शो ना करे. अब नाउ वी विल मूविंग फॉर another examples of a prime number, divisibility of prime number. So that is a 9. यहाँ पे देखेंगे द डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज द सेम. जैसे इसमें देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, व्हाट इज 9? डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 9, अ नंबर इज डिविजिबल by 9 if the sum of all digit is divisible by 9. So we can write example. For examples we can see here. For example, check here that we have a number 846. Let us find out that this number is divisible by 9 or not. ये नंबर डिविजिबल है 9 से और नॉट. इसको नंबर को ऐड करते तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 + 6. तो क्या है, 8 + 4 12 and 12 + 6 18. 18 is divisible by 9. So this number 846 is divisible by 9. Without looking, without solving, we can solve that this number is divisible by 9. हम लोग बिना देखे इस नंबर को समझ सकते हैं कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 9 से. यानी इस नंबर, जितने भी नंबर होंगे ना, जिन नंबर के जो डिजिट्स होंगे सबको ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद जो नंबर आया अगर वो डिविजिबल है 9 से तो क्या है, वो 9 से डिविजिबिलिटी शो करेगा. अदरवाइज वो नंबर 9 की डिविजिबिलिटी शो नहीं करेगा. ठीक है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स. फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एग्जांपल्स 855. सो वी कैन सी हियर दैट, लेट अस चेक हियर दैट ये नंबर डिविजिबल है 9 से कि नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे 8 + 5 + 5, 8 + 5 13 + 5 is equal to 18. So this number is also divisible by 9. So we can find out here by doing this rules. Okay, follows this rules that adding the all digits and getting a numbers that is divisible by 9. Now let's discuss about the divisibility of 11, that is the prime number 11. We are going to discuss here divisibility of 11. Divisibility rule of 11. Divisibility rule of 11. We are going to discuss here only the examples that the number, given number is divisible by 11 or not. By that हम लोग समझेंगे कि रूल्स के साथ साथ समझेंगे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल्स वी कैन सी हियर. फॉर एग्जाम्पल्स I have a number and the number is that 3784. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी केयरफुल थिंग्स. हमको यहाँ पे देखना है 1 प्लेस, सेकेंड प्लेस पे नंबर क्या है, थर्ड प्लेस पे नंबर क्या है, फोर्थ प्लेस पे नंबर क्या है. सो लेट अस चेक हियर. ये क्या है, 1, ये 2 है, ये 3 एंड 4. हमें ये चेक करना है यहाँ पे कि जो ये जो ऑड नंबर के जो जितने भी ऑड नंबर हमने काउंटिंग किया है, यहाँ पे ऑड नंबर जितने काउंटिंग किया उसका सम करेंगे. 8 + 3 इज इक्वल टू 11. और यहाँ पे जो इवन नंबर की नंबरिंग है उसका भी सम करेंगे तो कितना है, 11. और नाउ वी आर जस्ट, अब उसको क्या करेंगे, इन दोनों का सम, जो ऑड नंबर प्लेसेस के जो सम आए हैं, इवन नंबर के जो प्लेसेस के जो सम आए हैं उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 11 - 11 इज इक्वल टू 0. सो आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इफ द नंबर इज 0 वी आर गेटिंग द नंबर. ये प्रोसेस करने के बाद द सम ऑफ इवन नंबर प्लेस एंड द सम ऑफ ऑड नंबर प्लेसेस एंड देयर डिफरेंसेस जो आते हैं, उनके डिफरेंस जो आएंगे, अगर 0 और 11 आते हैं तो इट कैन बी डिविजिबल बाय, इट कैन बी सो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. So we are getting here that a number at the place, one place is the first is an odd number. We can see 8 + 3 is equal to 11 and the sum of even places is 7 + 4, and that we can see here 7 + 4 is equal to 11. So 11 - 11 is equal to 0. So we are here 0. So that is why its number is divisible by 11. Okay. So now
we have let's take another examples to understand proper. Okay, so we have examples. For examples, we have 9647. Let us find out that this number. First we are going to count it. Okay, 1 2 3 4. The places at the odd number places is a 9 plus 3 is equal to 12, and 6 plus 7, we can say 6 plus 7 is equal to 13. So now 13 minus 12 is equal to 1. We are getting here 13 minus 12 is equal to 1. So here we can say that it is a mistake, sorry for that. And 9 plus 4 is equal to, we can hear the number is a 4. 9 plus 4 is equal to 13, and 6 plus 7 is equal to 13. So we are getting here 13 minus 13 is equal to 0. So by this number, by this rule, we can check the divisibility of 11, divisibility rule of 11 by this process. I hope that you have understood well.